অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ। আমি সবিস্তাৰে খবৰ ৰাখিছো আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অবৈধ বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ গৰজি উঠিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ। যদিহে তৃতীয়বাৰলৈ বিজেপি চৰকাৰ হয়, যদিহে ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বনায়, তেনেহ'লে এটাকৈ বিদেশীক অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি দিয়া হ'ব। আজিৰ দিনটোত ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে, বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে। কিছু সময় পূৰ্বে এই ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত তৃতীয়বাৰলৈ বিজেপি চৰকাৰ বনাওক আৰু তাৰ পাছতে এজনকৈ বিদেশী অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব। ডিব্ৰুগড়ত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ এয়া উদাত্ত ভাষণ। অবৈধ বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে এয়া ৰণসংকাৰ অমিত শাহৰ। পুনৰলৈ কৈছো, এজনকৈ বিদেশী অসমৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ব, বহিষ্কাৰ কৰি দিয়া হ'ব। অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে এতিয়া অসমৰ জনবিজ্ঞা সলনি কৰি পেলাইছে আৰু এইদৰে আজিৰ দিনটোত এইদৰে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈ ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানকো নেৰিলে। এই ধৰণে আজিৰ দিনটোত মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুনৰলৈ কৈছো, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত তৃতীয়বাৰলৈ বিজেপি চৰকাৰ বনাওক আৰু এটাকৈ বিদেশী অসমৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ব। এই ধৰণে আজি গৰজি উঠিছে অমিত শাহে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত তৃতীয়বাৰলৈ বিজেপি চৰকাৰ হ'লে এটাকৈ বিদেশী বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ব। অসমৰ ৰাইজে পুনৰ 5 বছৰ বিজেপি চৰকাৰক দিয়ক, অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সকলো ৰক্ষা হ'ব। এই ধৰণে আজিৰ দিনটোত ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে অমিত শাহে। পুনৰলৈ কৈছো, যিসমূহ আচলতে অনুপ্ৰৱেশকাৰী আছে, এই অনুপ্ৰৱেশকাৰী আগন্তুক 5 বছৰ অতি ভয়াৱহ হ'ব পাৰে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বাবে, কিয়নো আকৌ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী যদি হয়, তেনেহ'লে বিচাৰি খেদি পঠিওৱা হ'ব অনুপ্ৰৱেশকাৰীক। আৰু এইদৰে এতিয়া সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কিছু সময় পূৰ্বে এইদৰে উদাত্ত ভাষণ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুনৰলৈ কৈছো, কংগ্ৰেছে কেৱল অনুপ্ৰৱেশকাৰীক অসমত প্ৰৱেশৰে সুবিধা দিছিল, এই ধৰণে মন্তব্য কৰিছে অমিত শাহে। কংগ্ৰেছে কেৱল অনুপ্ৰৱেশকাৰীক অসমত প্ৰৱেশৰ সুবিধা দিছিল, অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ভোট বেংকৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল কংগ্ৰেছে। অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ভোট বেংকৰ বাবে ধ্বংস কৰি দিছিল কংগ্ৰেছে। আৰু আগন্তুক সময়ছোৱাত ৰাইজে বিজেপি চৰকাৰক দিয়ক, তেতিয়া অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ পৰা মুক্ত হ'ব অসম। অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বিচাৰি উলিওৱা হ'ব। আজিৰ দিনটোত এইদৰে গৰজি উঠিছে অমিত শাহে। এই মুহূৰ্তত কিছু মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো। आसाम की परेशानी हम सबकी है या नहीं है? पक्का है? आसाम में घुसपैठ होना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया था। मैं बधाई देना चाहता हूं भाजपा सरकार को, असम की और हमारे मुख्यमंत्री को, कि ये डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया। 1,26,000 एकड़ भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मैं आज असम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक घुसपैठियों को चुन कर असम के बाहर हम निकालेंगे। ये घुसपैठिया किसी भी तरह से असम और देश का भला नहीं कर सकते। हमारे सीमित संसाधन हैं, हमारे गरीबों का अधिकार घुसपैठिया छीनते हैं, हमारे डेमोग्राफी को बदल रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ भी वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मित्रों, ये घुसपैठिया इन्होंने
श्रीमंत शंकरदेव की जन्मभूमि को भी नहीं छोड़ा था और काजीरंगा के जंगलों में घुसपैठियों ने शिकार कर 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 हमारे गैंडों को खत्म करने का काम किया है। आज आसाम की जनता को मैं अपील करने आया हूं, ये जनसांख्यिकी का जो परिवर्तन है, इसको अगर आपने रोका नहीं तो आसाम आने वाले दिनों में बहुत दिक्कत में आएगा। और जनसांख्यिकी का परिवर्तन, घुसपैठियों को रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर। भाइयों बहनों, आसाम की सरहदें घुसपैठियों के लिए खुली थी। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, पहले सर्बानंद सोनोवाल और फिर हेमंत विश्व शर्मा हमारे मुख्यमंत्री बने, मोदी जी और आसाम सरकार ने मिलकर घुसपैठियों को आसाम की सरहदों में आना बंद कर दिया है। अब घुसपैठ नहीं होती है आसाम में, परंतु जो आ गए हैं उनको भी बख्शना नहीं है। चून चून कर बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पिछले 5 वर्षों में हमने बहुत बड़ा आर्थिक सुधार भी किया है। आसाम की जीएसडीपी को 4.1 लाख से बढ़ाकर 7.2 लाख करोड़ तक ले गए हैं और आसाम के नागरिकों की आय में 50% की वृद्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुई है। मित्रों, अगर हमने शांति चाहिए, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, समृद्ध खेती और पशुपालन चाहिए, तो एक ही विकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। यहां पर शासन फिर से एक बार लाना पड़ेगा। डिब्रूगढ़ वालों, एक